हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओडिशा एग्जाम प्रेप। आज हम IB जियो एग्जाम 2025 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें हम स्पेशल फोकस करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पर। यह टॉपिक कंपेटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, इसलिए चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझते हैं। व्हाट आर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की दुनिया में जनरेशंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में होने वाला मेजर बदलाव। हर जनरेशन में नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनोवेशंस आए जो कंप्यूटर्स को और भी तेज, छोटे और एफिशिएंट बनाते गए। मतलब जैसे जैसे टाइम आया, नए नए इंप्रूवमेंट्स आए जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेटर होती गई। आज हम स्टेप बाय स्टेप हर जनरेशन के बारे में समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। 5 मुख्य जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। दोस्तों, कंप्यूटर्स की हिस्ट्री में टोटल 5 मेजर जनरेशंस हैं और हर जनरेशन का अपना टाइम पीरियड और यूनिक फीचर्स रहे हैं। सबसे पहली जनरेशन थी जो 1940 से 1950 के बीच थी। इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब सर्किट और मेमोरी बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स काफी बड़े साइज के होते थे, इतने बड़े कि पूरे रूम्स भर जाते थे। ये मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव भी थीं और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थीं, इसलिए इन्हें चलाना कॉस्टली होता था। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज होता था और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पंच कार्ड्स, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप शामिल थे। कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं ENIAC, UNIVAC, IBM 701 और IBM 650। अगले पार्ट में हम सेकेंड जनरेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन की, जो मेनली 1950 से 1960 के बीच डेवलप हुई। इस जनरेशन में सबसे बड़ा चेंज ये आया कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर्स की वजह से कंप्यूटर्स पहले से काफी छोटे, तेज और रिलायबल बन गए। साथ ही कॉस्ट भी काफी कम हो गई और हीट जनरेशन भी बहुत कम हो गया, जो पहले एक मेजर प्रॉब्लम होती थी। इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेजेस का यूज होने लगा, जैसे फोरट्रान और कोबोल, जो प्रोग्रामिंग को थोड़ा आसान और एफिशिएंट बनाते थे। मेमोरी सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट आया और मैग्नेटिक कोर मेमोरी इंट्रोड्यूस हुआ, जो डेटा स्टोर करने का नया तरीका था। लेकिन इनपुट के लिए अभी भी मोस्टली पंच कार्ड्स का यूज होता था। कुछ फेमस एग्जांपल्स इस जनरेशन के IBM 7090 और CDC 1604 हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ, जो मेनली 1960 के दशक से 1970 के दशक के बीच थी। इस जनरेशन में सबसे बड़ी एडवांसमेंट थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी IC का यूज। पहले जहां हर ट्रांजिस्टर अलग चिप पर होता था, अब कई ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप पर आ गए। इस वजह से कंप्यूटर और भी छोटे, पावर एफिशिएंट और फास्ट बन गए। इसी जनरेशन में कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, जो पहले नहीं होते थे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे बेसिक और C भी यूज होने लगे, जो प्रोग्रामिंग को और सिंपल बनाते थे। रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी भी काफी इंप्रूव हुई। कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं IBM सिस्टम 360 और PDP-8। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ, जो 1970 के दशक से आज तक कंटिन्यू है। इस जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी माइक्रोप्रोसेसर्स, जो VLSI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मतलब बहुत ज्यादा सर्किट को एक चिप पर इंटीग्रेट करना। इस जनरेशन ने पर्सनल कंप्यूटर को पॉसिबल बनाया। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ। GUI इंटरफेसेस का इंट्रोडक्शन हुआ, जो कंप्यूटर्स को यूज करना और भी फ्रेंडली बनाते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बनने लगे, मतलब हम घर बैठे आसानी से कंप्यूटर यूज कर सकते थे। IBM PC, एप्पल II और एप्पल मैकिंटॉश जैसे एग्जांपल्स इसी जनरेशन के हैं। और आज हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की, जो 1980 के दशक से स्टार्ट हुई और अब तक कंटिन्यू है। इस जनरेशन का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और पैरेलल प्रोसेसिंग पर। ULSI टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो और भी ज्यादा सर्किट्स को चिप पर इंटीग्रेट करता है। AI की वजह से वॉइस रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स डेवलप हुए, जो आज हमारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में देखने को मिलते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग भी इस जनरेशन का एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आज के टाइम में स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स फिफ्थ जनरेशन के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन 1,
The first generation of computers used which of the following as their basic components? Option A, microprocessors. Option B, transistors. Option C, vacuum tubes. Option D, integrated circuits. The correct answer is option C, vacuum tubes. Question 2. Second generation computers replaced vacuum tubes with which of the following? Option A, microprocessors. Option B, transistors. Option C, integrated circuit chips. Option D, magnetic tapes. The correct answer is option B, transistors. Question 3. Which programming language was first introduced during the second generation of computers? Option A, machine language. Option B, assembly language. Option C, Fortran and COBOL. Option D, Python. The correct answer is option C, Fortran and COBOL. Question 4. The use of integrated circuits in computers belongs to which generation? Option A, second generation. Option B, third generation. Option C, fourth generation. Option D, fifth generation. The correct answer is option B, third generation. Question 5. Which generation of computers introduced the use of microprocessors? Option A, first generation. Option B, second generation. Option C, third generation. Option D, fourth generation. The correct answer is option D, fourth generation. Question 6. Artificial intelligence is associated with which generation of computers? Option A, second generation. Option B, third generation. Option C, fourth generation. Option D, fifth generation. The correct answer is option D, fifth generation. Question 7. Which generation of computers saw a significant reduction in size along with an increase in speed? Option A, first generation. Option B, second generation. Option C, third generation. Option D, fifth generation. The correct answer is option C, third generation. Question 8. What was the major disadvantage of vacuum tube-based computers? Option A, extremely small size. Option B, slow processing speed. Option C, overheating and large power consumption. Option D, non-availability of storage. The correct answer is option C, overheating and large power consumption. Question 9. The ENIAC, the first electronic general purpose computer, belonged to which generation? Option A, first generation. Option B, second generation. Option C, third generation. Option D, fourth generation. The correct answer is option A, first generation. Question 10. Which generation of computers is still under research and development? Option A, third generation. Option B, fourth generation. Option C, fifth generation. Option D, sixth generation. The correct answer is option C, fifth generation. Question 11. Which of the following was the main storage medium in first generation computers? Option A, hard disk. Option B, magnetic drum. Option C, solid state drive. Option D, cloud storage. The correct answer is option B, magnetic drum. Question 12. Which input method was primarily used in first generation machines? Option A, graphical user interfaces. Option B, punch cards. Option C, keyboard and mouse. Option D,
touch screen. The correct answer is option B, punch cards. Question 13. The development of operating systems began during which computer generation? Option A, first generation. Option B, second generation. Option C, third generation. Option D, fourth generation. The correct answer is option C, third generation. Question 14. Transistors were invented in which year, paving the path for the second generation of computers? Option A, 1936. Option B, 1947. Option C, 1952. Option D, 1964. The correct answer is option B, 1947. Question 15. The IBM 1401 belonged to which generation of computers? Option A, first generation. Option B, second generation. Option C, third generation. Option D, fourth generation. The correct answer is option B, second generation. Question 16. Integrated circuits, also called IC chips, were invented by whom? Option A, Charles Babbage. Option B, John Bardeen and Walter Brattain. Option C, Jack Kilby and Robert Noyce. Option D, Bill Gates and Paul Allen. The correct answer is option C, Jack Kilby and Robert Noyce. Question 17. Which computers made use of VLSI technology, meaning very large-scale integration? Option A, first generation. Option B, second generation. Option C, fourth generation. Option D, fifth generation. The correct answer is option C, fourth generation. Question 18. Which of the following was not an advantage of third generation computers? Option A, faster processing. Option B, smaller size compared to second generation. Option C, voice recognition. Option D, lower power consumption. The correct answer is option C, voice recognition. Question 19. Miniaturization of hardware components was primarily due to what? Option A, vacuum tubes. Option B, transistors. Option C, microprocessors. Option D, cloud computing. The correct answer is option C, microprocessors. Question 20. Fifth generation computers aim to utilize which of the following? Option A, relays. Option B, chips and cards only. Option C, artificial intelligence and parallel processing. Option D, magnetic drums. The correct answer is option C, artificial intelligence and parallel processing. Question 21. Which of the following companies introduced the first microprocessor, the 4004, in the 1970s? Option A, IBM. Option B, Intel. Option C, Microsoft. Option D, Apple. The correct answer is option B, Intel. Question 22. Which generation of computers can be classified as using semiconductor integrated circuits? Option A, first generation. Option B, second generation. Option C, third generation. Option D, fourth generation. The correct answer is option C, third generation. Question 23. Which generation of computers made machines cheaper, faster, and widely accessible for personal use? Option A, second generation. Option B, third generation. Option C, fourth generation. Option D, fifth generation.
The correct answer is option C, fourth generation. Question 24. The UNIVAC 1 is an example of which generation of computers? Option A, first generation. Option B, second generation. Option C, third generation. Option D, fourth generation. The correct answer is option A, first generation. Question 25. The key feature of fifth generation computers compared to earlier generations is what? Option A, use of vacuum tubes. Option B, use of assembly language. Option C, knowledge-based systems and natural language processing. Option D, use of simple calculators. The correct answer is option C, knowledge-based systems and natural language processing. तो दोस्तों, आज के जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सेशन में इतना ही कवर किया। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा के नए कंप्यूटर फंडामेंटल्स वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाते रहो। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।